and it has to be properly given by No problem. 1 or 2 days. Mr. Swapnil Ganguly, is it not sufficient to shake the conscience of a prudent man that where the girl was raped by her own father? That's my lord, because when first time they came, my lord, even when the inputs are there, my lord, I was also shocked that they are going into that line also. So I also of the view, my lord, that how the society is. I'm not, देखिए, perverted mind cannot be attributed to the entire society, right? But What my view is, very suppose if I, no, just a minute, let me put it in black and white. If one person is of a perverted mind, that doesn't mean that it is the reflection of the society, right? So let us not use the word society. I was on the question, if a minor girl who always treats her father as the custodian under whom she can feel that she is in the safest hands in the world, was subjected to rape by her father, the mental agony under which she might have undergone, number one. Number two, she was forced by her family members, including the mother, not to speak against her father. Number three, when the DNA test report was already received, showing that the person who is facing trial is not the biological father, but somebody else is the biological father, then your officers showed the complete insensitiveness by raising their hand. Sir, we are unable to locate the real culprit. Apart from that, a specific allegation was made against the character of a minor girl. Right? Only when I took it very seriously that you cannot run away from your liability. And once even IO was changed by specifically expressing that he has lost the faith of the court, then your senses of investigation woke up. Similarly, in one case, when the order was issued to summon 6 or 7 police officers, although you went in WA, got a stay of 2 days, but under an apprehension कि कल को हम फिर उलझ जाएंगे, within 2 days, आज पेपर में छपवाते हमने बड़ी मेहनत की, we have caught hold of that person. Whereas your police officers were filing false reports before this court. And you did not have a courage to say that everything has been done only on the intervention of the High Court. Definitely, Bharat, that is. Everything is missing, and you are tapping your back by claiming that you are so sensible, so serious about the rights of your citizens. Is it the conduct of the police department? No, that should not. What? No. You should have mentioned that the court had issued a contempt notice against the superintendent of police, Jabalpur. Although there is a stay by the division bench, but the division bench had granted only 2 days to arrest him. And under compulsion, we have arrested him. You did not have you do not have any face to show you the society. And you are projecting like that you are doing the things of the girl. You have raised your hands that we are not in a position to locate the real culprit. और आज सुबह सीना चौड़ा करके आपके पुलिस अधिकारी रिपोर्ट भेजते हैं, देखिए सब पकड़ लिया हमने. और पकड़ा किसको? डीएनए रिपोर्ट के बाद, साइंटिफिक रिपोर्ट के बाद निकला कौन? फादर. आपको दिख नहीं रहा था जब डीएनए रिपोर्ट आई थी कि वो 2 आदमी कल्प्रिट के तौर के ऊपर ट्रायल फेस कर रहा है, whether he had committed rape or not, but he is not the biological father of the fetus. तब आपको नहीं समझ में आ रहा था? इतना इंसेंसिटिव होके, संवेदनहीन होके आप लोग काम कर रहे हैं. फिर आप कहते हैं कोर्ट बड़ी नाराज रहती है. किस बात की नाराज रहती है? सर, आई एम पॉइंटिंग आउट योर लैप्सेस, योर insensitiveness towards the society and towards the residents of this country. और आप लोग ये सीखने के बजाय कि हमारी वर्दी की कीमत क्या है, सर कोर्ट नाराज रहती है. क्यों कोर्ट नाराज रहेगी? सर, ये तो लैप्सेस थे. क्या लैप्सेस हैं सर?
क्यों नहीं आप पब्लिकली एडमिट करते हैं कि यस इट वाज ओनली ऑन द इंटरवेंशन ऑफ द हाई कोर्ट वी वोक अप एंड दैट टू व्हेन आवर 6 police officers were in a difficulty. They would have been placed under suspension, therefore we woke up. यहां पे आप क्यों नहीं बोलते हैं कि सर यस we had raised our hands by alleging against the character of the girl, but only because of the intervention by the court we have successfully trapped the person. अभी आप नहीं बोलेंगे. नहीं सर, वो तो अभी जब हम पूछेंगे कि आपके एसपी ने क्या किया तो आप कहते हैं हमने सस्पेंड कर दिया. आपके एसपी को समझ में नहीं आ रहा था क्या? कि बड़ा खुश हो रहा था कि मैंने उसके पिता को पकड़ लिया एज अ रियल कल्प्रिट. What about the statement which was made by the TI Kent? that he should have been look into the aspect in that matter, in that manner also, Marot. But now. But आपका क्या क्या काम? That आपको सीआरपीसी में करना क्या है? घूमने के लिए कि वर्दी लगा के घूमना है? क्या करना है आपको सीआरपीसी में? now they have corrected their mistake, Marot. They have corrected every time, every day they are getting a strict first orders from the court. अभी तक वो सुधरे नहीं है. Every time you say that the police department has corrected itself. मुझे बुरा लग रहा है सुबह से. The moment I was told that the father was the real culprit, I was just thinking about the mental condition of a girl who had not only undergone that trauma, but who was compelled by her family members not to speak against her father. पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. You are very happy. This is the sensitiveness of the police department towards the girls of this state. This is what you want to communicate to the court. No. Now you are saying that in the morning you had said, now we are placed under suspension. कुंभकर्ण हो क्या? जब तक ढोल नहीं बजाएंगे तब तक नींद नहीं खुलेगी. क्या? सर उसको पहले. अरे बेटी बचाओगे तो तब तो बेटियां बचेंगी सर. नारे लगाने से कुछ नहीं होगा. क्यों नहीं आपके एसपी को अकल आई थी कि साहब इतना सीरियस लैप्स क्यों किया मेरे आईओ ने? कैजुअल है वो. ये रखिए आप अपने पास, इसको फाइल कीजिए एंड फाइल द एफिडेविट of the Superintendent of Police 20128/2024. Shri Swapnil Ganguly, counsel for the respondent, state this court by order dated 6/5/2024 passed in MCRC number 13995/2024 had directed the police to had directed the IG Sagar to withdraw the investigation. यार वो निकालो यार 1399 उसका देखते हैं. I will pass a detailed order, sir. सुबह से मेरे को बुरा लग रहा है कि यार एक परवर्टेड माइंड के करके एक लड़की की क्या स्थिति है. तो आप लोग मजे ले रहे थे. नहीं मजे नहीं ले रहा था. मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ. सॉरी सर. लेट मी क्लैरिफाई माई सेल्फ. हम लोग. लेट मी क्लैरिफाई माई सेल्फ. क्योंकि ये चीज. लेट मी क्लैरिफाई माई सेल्फ. आप लोग नहीं. मैक्सिमम आप मतलब. स्वप्निल जी लेट मी क्लैरिफाई माई सेल्फ. आप लोग का मतलब एजी ऑफिस नहीं. नहीं मतलब हम लोग तो सर बीइंग ए फादर हम लोग इस चीज को जब से देख रहे थे तो हम लोग को. स्वप्निल जी लेट मी क्लैरिफाई वेरी क्लियरली. आप लोग का मतलब एजी ऑफिस या गवर्नमेंट एडवोकेट्स नहीं. Whenever you will appear in your personal capacity, then I will put a personal question to you. But since you are appearing in a representative capacity, then all the questions are for your client, not for you. Whenever I use the word aap, that means I am referring to your client, not to Mr. Swapnil Ganguly. What sin Mr. Ganguly has committed? कुछ नहीं ना सर. But being a part and parcel of the society, such मुझे बुरा लग रहा है. That shakes the. So that is the natural consequence of the impact on each and every sensible person. अब आप मुझे ही बताइए कि आपके पुलिस अफसर को कोई फर्क नहीं पड़ता है. आपके एसपी को कोई फर्क नहीं पड़ता है. इतने हीनियस ऑफेंस में भी मेरा आईओ बोल के आया था कि साहब लड़की का कैरेक्टर जैसा है. मैं तो स्टेटमेंट बोल नहीं पा रहा हूं ओपन कोर्ट में कि क्या बोला गया था ओपन कोर्ट में उस गर्ल के बारे में.
अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो अपलोडेड है यूट्यूब के ऊपर। और मुझे ऑर्डर तक नहीं करने दिया जा रहा था। इट वॉज बीइंग आर्ग्यू विद सो मच ऑफ वेहमेंस कि इट शुड बी ड्रॉप टुडे एंड with the intervention of the at court, least now I feel happy. I feel happy that I succeeded in discharging my duties as a responsible member of the society. But I feel very bad that about the mental trauma under which the girl might be undergoing. those days must have been very, Eh? those days must have been very difficult months for that. Well, that is a member of the society, not as a judge. But But I'm shocked that the police department doesn't treat itself to be a member of the society. tomorrow we will take it tomorrow. क्या क्या करेंगे? आपके एसपी को होश नहीं आया था जब बड़ा खुश हो के अपनी पीठ थपथपा रहे होंगे कि यह हमने तो पकड़ लिया आदमी, पिता निकला वो तो। अब होश नहीं आया था जब डीएनए रिपोर्ट आ गई थी एंड दैट पर्सन वाज नॉट द बायोलॉजिकल फादर, whether they should not have filed an application on their own for further investigation before the trial court in the light of that DNA report. Why they were sleeping? And when this court took cognizance of that aspect, then why you made a statement that the girl is of such a character and we are unable to locate the real culprit? किस मुंह से बोला गया था सर? Sensitize them. सेंसिटाइज क्या कर लोगे यार? नहीं, लेकिन हर केस में आप लोग के खिलाफ स्ट्रक्चर हो रहा है, हर इंपॉर्टेंट केस में स्ट्रक्चर हो रहा है, आप कहते सेंसिटाइज कर लेंगे? आप ये सेंसिटाइज करेंगे कि जिस आदमी के लिए आप गलत रिपोर्ट यहाँ पे फाइल करते रहे, जैसे आपको पता चला कि आपके 6 अफसर अब निपट जाएंगे तो आप उसको 2 दिन के अंदर पकड़ के ले आए? ये सेंसिटाइज है? मजाक बना के रखा और पीठ अपनी थपथपाएंगे पेपरों में छपवा के कि हम पकड़ के लाए। ठीक है सर, मजे लीजिए आप लोग। मजे नहीं ले हाँ, सोसाइटी के मजे लीजिए। और क्या कर सकते, और क्या कह सकता हूँ सर? जब तक मेरे हाथ में आएगा मैं काम करूंगा एंड आई विल एंश्योर दैट यू डू नॉट टेक। We are also one of the. अरे गोविंद जी, मैं आपकी बात नहीं कह रहा हूँ, आपके एक लिमिटेड पावर्स है, यू कैन सजेस्ट, राइट? Since I have some more powers than you, therefore I have more responsibility. आप भी काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली जिसको काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहा है, इतना कहना चाहता हूं। अब आप बस इतना सा बता दीजिए, एक बच्ची के लिए उसका घर भी सुरक्षित नहीं है, चाहे एक ही परिवार हो इस सोसाइटी में, मैं सोसाइटी की बात नहीं कह रहा हूं, उस बच्ची का अपराध क्या है? मैं बार बार कह रहा हूं, एक परवर्टेड माइंड को हम सोसाइटी का रिफ्लेक्शन नहीं मान सकते, पर उस बच्ची का अपराध क्या है सर, ये बताइए मेरे को। कैन यू कार्व आउट एन एक्सेप्शन कि साहब ये लड़की उस परिवार में रहती है, देयरफॉर शी हैज नो राइट, शी शुड नॉट हैव एनी इमोशंस, शी शुड नॉट हैव एनी dignity of her body, her soul? If you can make an exception, then please argue. नहीं, बोल ही नहीं सकता। बोल नहीं सकते, पर आपके पुलिस डिपार्टमेंट करेगी नहीं, उल्टा कोर्ट में आके बोलेगी सर हम नहीं कर सकते क्योंकि लड़की इज ऑफ अ लूज कैरेक्टर। दिस इज व्हाट इट वाज कम्युनिकेटेड टू द कोर्ट। File the affidavit of your superintendent of police. लिखेगा, it is submitted by counsel for the applicant that after the order was passed by this court, a new investigating officer was appointed and ultimately it has been found, and ultimately on the basis of DNA test report, it has been found that father of the prosecutress is the biological father of the fetus. Thus, it is submitted that since the father of the prosecutress had raped his own minor daughter, therefore a separate FIR has been registered and the accused has been arrested. It is further submitted that only after a displeasure was expressed by this court in the first half of the day, the superintendent of police Sagar has placed the SHO police station Kent Sagar under suspension, who had expressed
who had earlier expressed his inability to trace out the, सब लिखा हुआ है order sheet में, मुझे याद है, मैं I will cross check it, to trace out the real culprit. Police staff. The superintendent of police is directed to submit an affidavit placing all the facts on record. The superintendent of police, Sagar, shall also explain that then when the first DNA test report was received, according to which the person who is facing trial under section 376 of IPC was not found to be the biological father of the fetus, then why no permission was taken by the police department from the trial court to carry out the further investigation to find out the correct culprit. The superintendent of police, Sagar, shall also file an affidavit that why the police department had shown so much of insensitiveness towards towards the minor girl, who by making a statement that the investigating officer is unable to find out the real culprit. List on परसों के लिए कर दीजिए. रियली कई बार बहुत बुरा लगता है सर, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है. Although I know कि judge should not have an emotion. Can I make a small? I know that the judges should not have an emotion, but this emotion outburst is only because of insensitiveness shown by the police department. हाँ सर, Monday के लिए क्यों सर? यहाँ से कितने घंटे लगते? 3 घंटे सर, अगर स्लो आएंगे. रास्ता बताओ. 3 रास्ते हैं सर. यहाँ से रैली से, दूसरा महाराजपुरा से, तीसरा राजमार्ग से. राजमार्ग वाला रास्ता 50 किलोमीटर ज्यादा है, टाइम उतना ही लगेगा. will find. महाराजपुरा वाला रास्ता 20 किलोमीटर ज्यादा है, टाइम उतना ही लगेगा. रहली वाला शॉर्टेस्ट है, टाइम उतना ही लगेगा. करते हो, find. करते हो, ठीक है, कर दो फिर.